हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडल पेपर 1 यूपीसी नेट 2026 का डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द प्राइमरी फोकस ऑफ नर्सिंग? ऑप्शन ए डायग्नोसिंग डिसीज, ऑप्शन बी प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशंस, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर एंड कंफर्ट, ऑप्शन डी परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर एंड कंफर्ट। Question number 2. Who is globally recognized as the founder of modern nursing? Option A Clara Barton, option B Florence Nightingale, option C Mother Teresa, option D Dorothea Dix. Option B correct होगा, Florence Nightingale. Question number 3. What is the normal resting heart rate range for a healthy adult? Option B correct होगा, 60 to 100 beats per minute. Question number 4. Which instrument is used by medical professional to measure blood pressure? Option B correct होगा, sphygmomanometer. Question number 5. What is the primary purpose of isolating a patient with an active airborne infection like tuberculosis? यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, वो करेक्ट होगा, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस टू द अदर्स. Question number 6. Which of the following is the standard method for establishing a completely sterile field in a hospital? Option C correct होगा, autoclaving the instrument with pressurized steam. Question number 7. In nursing, what does the acronym CPR stands for? Option A correct होगा, cardiopulmonary resuscitation. Question number 8. What is the first action a nurse should take if the patient experiences an adverse reaction during a blood transfusion? Option B. Stop the transfusion immediately. Option B correct होगा. Question number 9. Which route of medication administration delivers a drug directly into a vein? Option A intradermal, option B subcutaneous, option C intramuscular, option D intravenous. यहाँ पे option D correct होगा. Question number 10. What is the normal human body temperature when measured orally? 94.5 degree Fahrenheit, 96.4 degree Fahrenheit. Option C correct होगा, 98.6 degree Fahrenheit. Question number 11. Which document outlines the formal ethical principle and expectations guiding a nurse practice? Option B correct, Code of Ethics for Nurses. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा. Question number 12. What does cyanosis bluish discoloration of the skin typically indicate in a clinical setting? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, lack of adequate oxygen in the blood. Question number 13. When moving or lifting a heavy patient, which practice best protects the nurse from musculoskeletal injury? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, utilizing proper body mechanics, keeping a wide base and bending at the knees. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. Question number 14. What is the primary role of an advocate in nursing? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स राइट एंड प्रेफरेंसेस एंड सेफ्टी. ऑप्शन बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is a classic clinical sign of localized inflammation? यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, रेडनेस, वार्मथ एंड स्वेलिंग. ऑप्शन सी करेक्ट. Question number 16. What is the primary purpose of triage in emergency department? Option B correct होगा, to prioritize patient based on the severity of their condition. Question number 17. Which global organization is responsible for international public health guidelines and tracking outbreaks? Option C correct होगा, WHO, World Health Organization. Number 18. What type of bed is prepared for a patient who is arriving immediately from a surgical procedure? Option C correct होगा, post operative or recovery bed. Question number 19. Which microorganism is the primary cause of malaria? यहाँ पे होगा ऑप्शन बी करेक्ट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट. सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. Question number 20. What is the safest way for a nurse to verify a patient's identity before giving medication? Option B correct होगा, check the patient's identification band and ask them to state their full name. Question number 21. What name is given to an infection that a patient develops while staying inside a healthcare facility?
ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नोस्कोमियल हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच विटामिन्स आर क्लासिफाइड एज फैट सोल्यूबल। यहाँ पे ऑप्शन वी करेक्ट होगा, विटामिन ए, डी, ई एंड के। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेडिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिस्पीनिया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द टर्म ब्रेडिकार्डिया मीन्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अब नॉर्मली स्लो हार्ट रेट अंडर 60 BPM।